today, let's start with chapter number 17, our rights and duties. So the Constitution of India has adopted Constituent Assembly on 26 November 1949 and it came in force. वो force में कब आता है? 26 January 1950. Making India Republic and the Constitution of India एक supreme law है. Beside English version, there is also an official Hindi translation. Any law made by the government must be accordance with the Constitution. देखो जो भी गवर्नमेंट लॉ बना रही है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के. So we celebrate Republic Day on 26 January every year to mark the day on which our constitution was adopted. So the Indian constitution embodies certain rights and duties for the Indians, so they may lead to comfortable lives and act as a responsible citizen. So whether he is of different caste, sex, religion and place of birth. And the rights of citizen were called fundamental rights और जो duties थे वो क्या थे? Fundamental duties. Fundamental rights आपके part 3 में आते हैं और fundamental duties आपकी part 4 A में आती है. Now fundamental rights. We have 6 fundamental rights. Like first is right to equality. Right to equality, everyone, every citizen of India, they are equal in front of law and no one can be treated unfairly on the basis of sex, religion, place or birth. जो weaker section है society के, they protected by certain law. Seats have been reserved for them in schools, colleges, government jobs, respective body. और untouchability इसको हमने prohibit करा है. And in olden times the rulers used to give their subjects title and they were positioned with special right. और उनको क्या दिया गया? कुछ special rights दी गई. And this practice has been abolished by the Constitution. और ये practice को किसने abolish करा? Constitution. Then right to freedom. Every citizen of the country has the freedom of speech and expression. They can assemble peaceful. वो क्या करते थे? Assemble करते थे peacefully without arms and form union and association. And they moved to and settle in any part of country. They participated in any trade or profession for their choice. And however, one is free to do anything unless it affects the freedom of someone. ठीक है, अनलेस वो क्या कर रहा है? किसी के फ्रीडम को इफेक्ट कर रहा है. नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. सो नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स टू वर्क. कोई भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं करा जाता वर्क करने के लिए विदाउट वेजेस. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 कैन बी एम्प्लॉय. जो बच्चा 14 साल से नीचे है वो आपको उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते फैक्ट्रीज में एज अ लेबर. प्लस चाइल्ड लेबर को क्या करोगे? इग्नोर करोगे. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. एवरीवन is free to follow their own religion according to their wish. Now culture and education right. There are several culture, language, script in India. There are many minority group. जैसा आप देखेंगे Muslims हो गए, Christians हो गए, Sikhs हो गए, and these are called minority group as they have number of individual less than half of number, and each group has a right to follow its own custom and tradition. And what they did, they set up its own educational institutional anywhere in the country. Now right to constitutional remedies. ठीक है, all the citizens can ask for justice in a court of law. And we should keep in mind that fundamental right can be suspended. अगर emergency होती है तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? fundamental right को suspend कर सकते हैं. Then we have fundamental duties. We have different fundamental duties. Like first is safeguarding sovereignty, unity, integrity of the country. राइट. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट एंड फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन. हम रिस्पेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, फॉलो करेंगे. रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. देन फॉलो द पाथ ऑफ. हम नॉन वायलेंस और आपके सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी वाले पाथ को फॉलो करेंगे. आपके प्रिजर्व करेंगे हेरिटेज और कल्चर को. पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे कंट्री को. प्रोटेक्ट और कंजर्व करेंगे कंट्री को. अवॉइड करेंगे सोशल इवेंट्स लाइक डॉरी और गैम्बलिंग. नाउ डीपीएसपी जो आपके 4th A में है. ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपके पार्ट 4th में आती है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो व्हाइल रनिंग द कंट्री फॉर बेटर गवर्नेंस एंड फॉर वेलफेयर. सो दीज गाइडलाइंस आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. लाइक प्रोवाइड एडुकेट. आपको एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देना है. टेक केयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और उनकी कंडीशन को आपको इम्प्रूव करना है. Next is ensure that wealth is not concentrated in the hands of a few. Prevent child labor. Provide free education for children under the age of 40. Provide educational equal opportunities for men and women. और आप equal opportunity दोगे men और women दोनों को. Right?
This is all in this chapter. We have studied about our fundamental rights, what are our duties, and what are DPSP, Directive Principle of State Policy. Right? Now, let's meet in the next class. That's all for today. Thank you.